Welcome dear students. Today I came up with new chapter of Civics of 8th class with title India's Foreign Policy. So before starting this chapter, you must have to know what we are going to discuss in this chapter. So the title of this chapter is Foreign Policy, and you must have to know what is foreign policy. So why the country should have foreign policy, aim of foreign policy of India, factor influence on India's foreign policy, basic aspects of India's foreign policy, Panchsheel principle, non-alignment, anti-imperialism, anti-apartheid policy, disarmament, right? So these are all key point in this chapter that we have to understand, right? So students, you know why foreign policy is important, why countries should have foreign policy. You know, countries cannot live in isolation, and every country need to have foreign policy, and India has been considered as one of the major country of the world with population, resource, and military, intellectual, and industrial capacity, right? So there are more than 200 countries in this world, and you know, no country live in isolation, and no country develop its own. Somewhere it expects some help, like economical help, technical help. For business purpose, it seek help from the other nations, right? So to make you understand, I want to explain you some definitions of the foreign policy. So students, foreign policy is an activity of the state with which it fulfills its aims and interests within the international arena, and this simple definition requires explanation and addition in order to allow us to understand how we interpret the concept of the foreign policy and what foreign policy actually is, right? So definition of foreign policy, there are various definition of foreign policy. So if we will talk about foreign policy, so according to encyclopedia, so it states that foreign policy is the institution. According to encyclopedia, foreign policy is an institution for managing a state's relation with other states with the aim of preserving its own independence and promoting the social, economics, and cultural interest of its citizen, right? So mainly for prehistoric interest, one of the several attempts at the Marxist definition of the foreign policy should also be mentioned here. Just like the foreign policy is explained as the policy of the ruling class of the state, and which is direct toward the outside, towards the external relation of the state, and it comprises the principal responsibilities and aims of the state in the area of international relation with other states, with group of states, and with international organization and movements, right? And it also comprises the means and methods for their achievements, right? So students, फॉरेन पॉलिसी होती क्या है? सो फॉरेन पॉलिसी कंट्रीज़ के लिए ज़रूरी क्यों है? सो मैंने आपको बताया कुछ डेफिनेशंस हैं फॉरेन पॉलिसी की, और फॉरेन पॉलिसीज़ ज़रूरी क्यों हैं कंट्रीज़ के लिए. कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड की है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकती है, राइट? सो वर्ल्ड की डिफरेंट मोर देन 200 कंट्रीज आर देयर. तो कोई भी कंट्रीज जो है वो सारे रिसोर्सेज फुलफिल नहीं कर सकती है, या अदर कंट्रीज़ के साथ कोई बिना रिलेशन रखे हुए वो सारे अपनी कंट्री की नीड्स को पूरा नहीं कर सकती है. सो इसलिए इंडिया तो एक वास्ट कंट्री है, सो इंडिया को तो दूसरी कंट्रीज़ के साथ रिलेशन तो ज़रूरी है. तो इस तरह से हर एक कंट्री के दूसरे कंट्रीज़ के साथ रिलेशन होते हैं. सो इसीलिए हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसीज़ होती हैं, उसकी
किस तरह से उसकी नेबर कंट्रीज़ की साथ उनकी उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं, और वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ उसकी क्या पॉलिसीज़ हैं और उसके क्या रिलेशन है। तो हर एक कंट्री के दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशन होते हैं, इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं, ट्रेड रिलेशंस होते हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ। सो इसी तरह से हर एक कंट्री जो होती है उसको फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत होती है। सो यही क्वेश्चन का आंसर है, व्हाई द कंट्री शुड हैव फॉरेन पॉलिसी। सो ये रीजंस हैं, दैट्स व्हाई कंट्री शुड हैव द फॉरेन पॉलिसी। सो अगर हम इंडिया की बात करेंगे, सो व्हाट इज़ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो अगर हम ये देखें तो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इज़ फंडामेंटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस and friendship and cooperation among all the countries of the world, irrespective of their political system, and the foreign policy is aimed at promoting the international peace and security and maintaining good friendly relation with all the countries of the world. And India, which was colonial country under the mighty British rule, right? India was a colonial country before the independence, before the 15 August 1947. It was under colonial rule because India was ruled by the England. So experienced the power politics of the superpower during the Cold War period, and for herself the path of non-alignment and the peaceful coexistence. And India, while conducting its external relation with superpower, distinct itself aligning with other of the bloc, right? सो आपको पता है कि जब यहाँ पर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार विच स्टार्टेड इन 1939 टिल 1945, उसके बाद वर्ल्ड की जो कंट्रीज़ थी, इनके दो मेजर ब्लॉक्स बने थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। सो यूएसए एंड यूएसएसआर उस टाइम की सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ थी और कॉलोनियल कंट्रीज़ थी, जो दूसरी कंट्रीज़ के अंडर थी और दूसरी कंट्रीज़ उन पर रूल कर रही थी, जिसके इंडिया में इंग्लैंड रूल कर रहा था। तो वो सारी कंट्रीज़ उन दो मेजर मिलिट्री पावरफुल ब्लॉक्स थी जो थे, उनके साथ वो क्या कर रही थी, ज्वाइन हो रही थी। बट इंडिया एक ऐसा कंट्री था जो किसी भी पावरफुल ब्लॉक के साथ उसने नहीं ज्वाइन किया। सो वाइल कंडक्टिंग इट्स इंटरनेशनल एक्सटर्नल रिलेशन विद द सुपर पावर, डिस्टिंक्ट इटसेल्फ लाइनिंग विद अदर ऑफ द ब्लॉक, और वो इंडिया किसी भी ब्लॉक के साथ उसने ज्वाइन नहीं किया और उसने वहाँ पर इंडिया न्यूट्रल रहा। सो देयर बाई परस्यूइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी एंड मेंटेनिंग इट्स सोवरेनिटी, इंडियाज पॉलिसी आल्सो मेंटेन अलूफनेस इन द पॉलिटिक्स ऑफ द सुपर पावर विदाउट टेकिंग द साइड, एंड thus India always took just an independent judgment depending upon the issues involved in the international arena. Therefore, India's independence in foreign affairs paved the way for the concept of non-alignment that became not only the guiding principle but also the cornerstone of Indian foreign policy. Right? So it was the foreign policy that started off the non-aligned movement. ठीक, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ काफ़ी सारी कंट्रीज़ जुड़ गई, जो इंडिया ने स्टार्ट किया था कि कोई भी कंट्री, इंडिया कंट्री जो थी, उसने किसी भी उन जो मिलिट्री ब्लॉक्स बनी थी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, यूएसए एंड यूएसएसआर, उनके साथ ज्वाइन नहीं किया। और इसी वजह से जो वर्ल्ड की बाकी सारी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो भी नॉन अलाइन इंडिया के साथ जुड़ती गई बाद में। राइट? सो स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे इंडिया फैक्टर्स इन्फ्लुएंस on the India's foreign policy, basic aspects, Panchsheel principle, non-alignment, anti-imperialism, anti-apartheid policy, disarmament. So we will discuss all these in next session. So today we will conclude it here, and students, as you know, you have to make the separate notebook for SST subject and write all question answer, and whatever we will assign you, you have to write in that notebook and without any mistakes, and your notebook should be fair, and your notebook, and you have to use such a notebook that you can use in entire session, right? And